सो क्लास इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे आपकी न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश, और इसमें हम करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 49 पर। द माइस इन कौंसल। वन डे द माइस कॉल्ड अ जनरल कौंसल। एक दफ़ा चूहियों ने, बहुत ज़्यादा चूहियाँ जो हैं उन्होंने मिलकर एक जनरल कौंसल, बड़ी मीटिंग जो है वो बुलाई। देयर वाज अ फियर्स कैट इन द हाउस, कि घर में जो है वो एक खौफनाक बिल्ली है, विच किल्ड 1 or 2 ऑफ देम एवरी डे, जो 1 या 2 चूही को जो है वो रोज़ाना ख़त्म कर देती है। नाउ दे कुड नॉट मूव अबाउट फ्रीली, और अब वो आसानी से जो है वो इधर उधर नहीं घूम सकते। दे हैड टू वॉच आउट ऑफ फॉर द कैट, लिहाजा उनका काम है कि वो बिल्ली को देखते रहें, उस पर नज़र रखें। दे वर रियली अफ्रेड ऑफ द ब्लडी कैट, वो इस होनहार बिल्ली से जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर, और वो इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। ऑल ऑफ द माइस गैदर्ड इन द स्टोर रूम टू होल्ड अ फ्री डिस्कशन ओवर द प्रॉब्लम, लिहाजा जितनी भी चूहियाँ थीं उन्होंने एक स्टोर रूम में जो है मीटिंग की, ताकि वो मुकम्मल आज़ादी के साथ जो है अपने मसले का हल कर सके। Many suggestions were offered and much was debated on the important matter. बहुत ज़्यादा तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई, and much was debated, और बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई on the important matter, इस बड़े अहम मसले पर। A young mouse gave a plan, एक नौजवान चूहे ने जो है वो एक मंसूबा दिया, that the best way, कि बेहतरीन तरीका ये है to be out of the danger of the cat was to wear a bell around her neck, कि अगर हम बिल्ली से जो है खतरे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर हम इसके गले में एक घंटी बांध देंगे। एन इनोसेंट माउस सेड, एक बड़ी मासूम से चूहे ने कहा, व्हाट विल हैपन इफ द कैट wears a bell, क्या होगा अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाएगी। द यंग माउस रिप्लाइड, तो फिर नौजवान जो चूहा था उसने जवाब दिया, इफ़ द कैट wears a bell, अगर बिल्ली जो है वो घंटी बांध देगी, एंड मूव्स, और फिर इधर उधर जाती है, द बेल विल रिंग, और फिर घंटी बजेगी, एंड वी विल बी अवेयर ऑफ हर कमिंग नियरर, तो फिर हम आगाह हो जाएंगे जब वो हमारे करीब आएगी। डेट वॉज द बेस्ट आइडिया, ये तो बहुत बेहतरीन ख्याल है। एवरी बॉडी लाइक्ड इट, हर कोई इसे पसंद करता था। दे गेव द यंग मैन ग्रेट अपॉल्स, लिहाजा जो नौजवान चूहा था, यंग माउस था, उसको जो है बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ हुई। एवरी माउस रिजॉइस्ड, हर चूहा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। दे वर सो हैप्पी, वो बहुत खुश थे, विद द आइडिया ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द कैट, दैट सम ऑफ देम इवन बिगेन टू डांस, हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था इस ख्याल से कि अब जो है इस आइडिया से जो है वो हम लोगों को बिल्ली से हमारी जान छूट जाएगी। अब हर किसी ने जो है वो डांस करना शुरू कर दिया। एन ओल्ड माउस, एक बूढ़ा चूहा जो है, विच हैड बीन साइलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, स्टूड अप, जो कि इस पूरे काम के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा खामोश था, खड़ा हुआ, एंड सेड, और फिर कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, नो डाउट द प्रपोजल ऑफ द यंग माउस इज़ वेरी वॉइस, इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान चूहे का जो प्रपोजल था वो बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना था। वी आर टेरिबली डिस्टर्ब बाय द विशियस कैट, हम इस खौफनाक बिल्ली से यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वी हैव रन शॉर्ट ऑफ फूड, हम लोगों को जो है वो खुराक की कमी पर इधर उधर भागना पड़ता है। द कैट इज़ ऑलवेज सिटिंग इन द किचन, और बिल्ली हमेशा किचन में बैठी होती है। इफ़ एनी ऑफ अस हैपन्स टू गो देयर इन सर्च ऑफ सम फूड, अगर हम में से कोई भी जो है वहाँ पर खाने की तलाश में जाता है, इट बिकम्स एन ईजी प्रे टू द किलिंग कैट, तो वो बहुत आसानी से जो है वो इस कातिल बिल्ली का शिकार बन जाता है। बट वी कैन नॉट रिजॉइस, लेकिन हम खुश नहीं हो सकते, अनलेस वी नो दैट द प्रपोजल इज़ प्रैक्टिबल, जब तक जो ये मकसद जो है ये अमली तौर पर पूरा नहीं होता। ही लुक्ड एट द फेस ऑफ माइस, फिर जो है उसने चूहियाँ जितनी भी हैं उनके चेहरों को देखा, अराउंड, एंड फर्दर सेड, और मजीद कहा, लेट अस फर्स्ट डिसाइड, सबसे पहले तो ये फैसला करो, हु विल फास्टन अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, के कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा।
Who will fasten a bell around the cat's neck? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? This question was resounding in the minds of all mice. अब ये जो है सवाल जो है वो तमाम जितनी भी चूहियाँ हैं उनके ज़हनों में फिर रहा था. But no one came forward to offer his services. लेकिन किसी ने भी जो है इस खिदमत को, इस काम को करने के लिए ऑफर पेशकश नहीं की. They looked at one another. वो एक दूसरे को देख रहे थे. But nobody dared. लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं थी to do the task, ये काम करने के लिए. The meeting ended in smoke. लिहाजा जितनी भी मीटिंग थी वो धुएं में उड़ गई. So class, filling the blanks from the given words. Wishes, practical, bell, proposal, failure or problem. They gathered in the storeroom to discuss the dash proposal. They wanted to fasten a dash around the neck, cat's neck bell. The cat was bloody and dash vicious. The old mouse said the plan is not dash practicable. Number 5, they all rejoiced when they heard the young mouse dash problem. The meeting was a dash failure. Okay. Next, tick the true answer. The mice called a general meeting to rejoice and dance. B, to get rid of the cat. C, to steal food from the kitchen. D, to invite the cat. B, to get rid of the cat. The young mouse suggested that they should kill the cat. B, they should bring a dog. C, they should escape. D, they should fasten a bell around the cat's neck. So option D, they should fasten a bell around the cat's neck. When they heard the plan, all mice worried, left, rejoiced, cried, rejoiced. C option. The old mouse said, who will fasten bell around the cat's neck? B, who will bring a dog? C, who will kill the cat? D, who will escape? So option A is who will fasten a bell around the cat's neck. The cat was A, friendly and innocent. B, fierce and killing. C, frightened and scared. D, kind and helping. B, fierce and killing. The meeting ended in success. B, continued afterwards. C, ended in smoke. And D, was raised by the cat. So option is C, ended in smoke. Next question answer. What for did the mice call a general council? The mice called a general council to discuss the problem of the fierce cat. Number 2, where did the mice gather? Answer, the mice gathered in the storeroom. Number 3, what plan did the young mouse give? The young mouse gave a plan that the cat was to wear a bell around her neck. Question number 4, what did the innocent mouse ask? He asked what will happen if the cat wears a bell. Question number 5, why did some mice begin to dance? They were so happy with the idea of getting rid of the cat that some mice began to dance. Question number 6, what did the old mouse want to decide before they could rejoice? He wanted to decide who would fasten a bell around the neck of cat. Question number 7, who come forward to offer his service? No one came forward to offer his services. Question number 8, how did the meeting end? The meeting was ended in smoke. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।